See the frost on the roof of the homestay that I am staying. You can see what is frost here. So I think the temperature was sub-zero. रात को जो टेम्परेचर था वो माइनस में चला गया था, ये आई एम श्योर, क्योंकि कल शाम को जब आए थे यहाँ पर होम स्टे पे, ये घूमे जोड़ बांग्लो, वहाँ पर जो टेम्परेचर था तब 4 दिखा रहा था एंड दैट वाज एट 7 PM सॉरी। अभी जो देख रहा हूँ अभी टेम्परेचर ऐसे ही होगा, रात को शायद कम हो गया था। अभी देखिए पानी, यहाँ से पानी झर रहा है, इतना ठंडा है। पानी झर रहा है, नीचे गिर रहा है, इधर धूप भी अच्छा खासा है। अभी मैं निकलूँगा बार्डिंग के लिए और बहुत ही ठंडा है। इन स्पाइट ऑफ दैट माई कैमरा इज़ वर्किंग वेल। मेरा जो कैमरा है ओलम्पस, दैट इज़ वर्किंग वेल, वेरी वेल, एंड ओलम्पस इज़ you know a rugged camera. Lens is also weather sealed, so it can work in minus temperature also. So now I'll go out for some time for boarding. This is my room. So guys, can you see the frost, or just see these are the snow collected on my windshield. So definitely it was sub-zero, temperature sub-zero at night. See, these are snows, and there was some difficulty in starting the car initially, but now it is resolved. Look how car I have now started. So this is the state, and in this state I will try my new camera OM1. Now I am inside the car and it is very cold. In my car it is showing temperature 2 degree. That means at night it was definitely sub-zero, and already you have seen the frost, or I will say snow, pure snow over my car, though it was in the shade. So I think the dew drops that was collected outside the windshield, and that was converted to snow. So there is a state. Now I am going somewhere for some boarding. I will not get much time, but 1 hour or so, and within that time I will try to test my OM1 camera. Already I have tested, and I was just trying different settings. It is somewhat different. EM1 Mark II camera is different. The menu is different. Autofocus is different. There is AI autofocusing, and it's just amazing. A detailed review I will give you later. Today I am going for boarding, so stay with me. Now you can see clearly the ice crystals on grasses and bushes, and so it's severely cold here, and I am out here for boarding. And see, here I can see Kanchenjunga, though very faint, but I can see Kanchenjunga peak from here. And in these bushes there are birds, about 4 such birds. This area is known as Lecture Jagat. It is hardly 15 minutes drive from my place where I stay at Ghum Manjang, and these bushes are full of birds. So I have come here. It's now 8:15. अभी मैं आया हूँ यहाँ पर।
Just listen to the calls of the birds. So many birds, even in this severely cold weather. इतना ठंडा में भी देखिए आप यहाँ पर पूरा पंछी हर भरा बर्ड्स पूरा यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है. And in the spring season, I don't know what will happen. जब स्प्रिंग आएगा ना तो यहाँ पर और खूबसूरत हो जाएगा. यहाँ पर ऑडोडेंड्रन भी आएगा और यहाँ पर बहुत सारा बर्ड्स दिखता है. Now it's very cold for me and I think they're accustomed to this weather. Already I have caught some birds. I have to identify later, but till now OM1 is doing a great job. AI autofocus is doing a great job and is just pinpointing towards the bird, and autofocus is very accurate in spite of all the twigs and branches behind and in front of the bird. There is no problem in locking to the autofocus, so that is the main advantage. So this is the reason I changed from EM1 Mark II to this one. I know that you will tell that other cameras are also coming with AI. I know, but their body is full frame and APS-C cameras also, but they're not so much effective. And full frame cameras like Canon, Nikon, their body is almost twice the price of this Olympus body. So what is the use in buying those bodies? I am not a professional. मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ. तो अभी जो कैमरास जो आ रहा है ऑटो फोकस AI हो गया है सब कैमरा में ऑलमोस्ट, बट उसको लेने का क्या फ़ायदा. इसका जो डबल दाम दे के हमको मिलेगा, हमको कोई फ़ायदा नहीं है. मैं तो मेनली वाइल्ड लाइफ शूट करता हूँ, तो इसमें रीच भी बढ़ जाता है, ऑटो फोकस बढ़ जाता है, और सबसे अच्छा बात है कि जो ISO जो परफॉर्मेंस यहाँ का जो कैमरा का आता है, दैट इज़ जस्ट ऑसम. यू नीड नॉट वरी अबाउट द ISO 10,000 12,000 like that anymore. So that is a big advantage for this modern day cameras. And also one new lens was launched recently by Olympus, 150-600. Though that is not a pro lens, but that will give you more reach. So definitely I'll try that and review one day. Currently I am shooting with 100-400. Olympus अभी एक नया लेंस निकाला है. आई थिंक वाइल्ड लाइफ शूटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि उसका जो रीच है वो आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा और किसी भी कैमरा सिस्टम में. वो कैनन हो सकता है, निकॉन हो सकता है, किसी भी कैमरा में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 150-600 मीन्स इज़ considering the twin to crop factor, it will be almost 1200 maximum reach. And above all, if you can add the converter, teleconverter 1.4 or 2 into teleconverter you can add, so maximum reach will be 2400 mm. That's incredible. So आपको डेफिनेटली हमको लग रहा है जो वाइल्ड लाइफ शूटर है उन लोगों को ओलंपस की तरफ एक बार देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. अब नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लीजिए, ये आप ट्राई कीजिए, हमको लगता है कि आपको अच्छा लगेगा. Really I am very much satisfied with the performance of this little camera OM1, and I know what further enhancement OM1 Mark II has done, but surely I don't need that thing. It's
Autofocus of OM1 is amazing. Autofocus is locking very well. Till now I have backed almost 4-5 birds picture. So I'm roaming also here. This place is awesome because it's full of birds. In spite of so much cold here, the main positive thing is the weather is very sunny. You can see it's cold but it's sunny. So definitely this is a good weather for birding. Clear weather. It's essential for birding. I'm getting good light, and I'm seeing that there is no problem with the high ISO. I'm using 10,000, 12,000, but there is no such problem of noise. So there is a major advancement in the sensor of the camera. जैसे आप लोग मेरे आगे का जो वीडियो है उनमें देखा है, मैं तो टेक्निकल रिव्यू नहीं करता हूँ, लेकिन फील्ड में जो यूज़ करता हूँ उसके बेस पर आधारित है मेरा जो रिव्यूज़. इसलिए आपको मैं कहूँगा कि अगर आप कैमरा के बारे में रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो यूज़ किया हुआ है, ऐसे ही रिव्यू हम देते हैं, मेरा चैनल में पोस्ट करते हैं. मैं यूज़ करता हूँ, उसके बाद ही मैं बोलता हूँ किसी कैमरे के बारे में. एंड डेफिनेटली प्रोस एंड कॉन्स. एंड ये कैमरा मैंने परचेज़ किया है, लेंस भी मेरा परचेज़ किया हुआ है. ये नहीं है मैं लोन में लिया, किसी ब्रांड एम्बेसडर हूँ. सो ऑनेस्ट ओपिनियन आपको सुनने को मिलेगा किसी भी कैमरा के बारे में. सो हाँ, डेफिनेटली सब कैमरा में कुछ ना कुछ तो खामियां ज़रूर रहता है. ऐसे नहीं है कि हर कैमरा जो एक्सपेंसिव कैमरा हो परफेक्ट कैमरा है. नहीं, परफेक्ट कैमरा ऐसा कुछ नहीं होता है. सब कैमरा के कुछ ना कुछ तो खामियां रह जाता है. अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव टू बाय योर कैमरा, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड द परफेक्ट कैमरा इज़ द कैमरा दैट you have with you always. That is the perfect camera in my definition. So जो मेरे पास है उसको मैं यूज़ करता हूँ, एंड उसका हर चीज़ जानना ज़रूरी है आपको सही तरह से यूज़ करने के लिए. Before you use one camera fully, you have to know everything about that camera, be it the menu system, be it the autofocus system. And that takes a long time, maybe months or years before if you are accustomed to a camera. And after that you can realize the full potential of a camera or a lens. And that's the reason I think those reviews or comparisons that you see in the YouTubes nowadays, that is incomplete, because they use the camera or lens for a few days and give their opinions. And I know they are professionals, but still they have not used the full potential of the camera or the lens. So how can they opine about that? So here you can see I'm using it in the field, and after using rigorously I will give my opinion, and also I will put forward both the pros and cons, everything. Not only that I am just showing you the good things and hide bad things about one camera or that. You know, the EM1 Mark II was a good camera, definitely, but continuous autofocus sometimes lacked that confidence. Sometimes it missed the perfect autofocus. So in that situation, this OM1 is perfect because it can give you perfect autofocus and more keeper than the previous generation of Olympus camera. इधर मैं आसपास में जो देख रहा हूँ
जो स्पॉटेड लाफिंग थ्रस बहुत सारा है, चेस्टनट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रस, एंड कुछ हमको रेड स्टड भी देखा, और जो है एक ब्लू विसलिंग थ्रस देखा, और ना जाने और कितना कितना तरह का बर्ड है अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप देखते हैं बाद में पिक्चर जब आएगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे सामने से अभी बहुत सारा जा रहा है, उसको वीडियो में खींचता हूँ अभी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर रिटर्न। अभी हमको लौटना पड़ेगा। बहुत ही कम टाइम मिलता है, इसी कम टाइम में हमको बर्डिंग का टेस्ट करना पड़ा। ये जो एरिया है बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज़ लेप्चा जगत। यहाँ से माउंटेन पिक्स भी दिखता है। यहाँ का जो फॉरेस्ट है, बर्ड्स बहुत सारा रहता है। आप कभी भी आइए आपको बर्ड्स मिल जाएगा। सो दिस इज लेप्चा जगत। Now here I am with my OM1 camera and Olympus 100-400 lens. Now this is the end of the birding session for today morning. Someday I will post a detailed review of this lens. Today I tested that OM1 camera is working well with the 100-400, but I think maybe it will be better with the prime lens 300 f4 or the newer generation 150-600 that was recently launched. So I am preparing for that to upgrading to that lens. But until then I have to be satisfied with this lens. So that's all for now today. Okay, thank you for watching. Please subscribe my channel if you want such kind of videos regarding photography, birds and traveling videos. You can subscribe and also press the bell notification. Also press the bell button so that you get the notification at the earliest. So that's all. Thank you for watching.